Good morning, one and all. I, Mahi Siddiqui of class 10th, welcome you all to the special assembly to celebrate Ambedkar Jayanti, the birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, whose contribution in shaping the Republic of India in post-independence era has no other parallels. Now, let us begin the assembly by seeking the blessings of the Almighty. Father, we thank Thee for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care, and all that makes the world so fair. Help us to do the things we should, to be to others kind and good. In all we do, in all we say, to grow more loving every day. Amen. It is a good idea to be surrounded by positive thoughts. So, today's thought for the day is equality is the soul of liberty. In fact, there is no liberty without it. I repeat, equality is the soul of liberty. In fact, there is no liberty without it. Now, Akshat Panikar will update us with some news. Good morning. Today's news headlines are: National news. 4 people were killed when a CSIF unit fired upon a mob in Coach Behar in Bengal near a polling booth. PM Narendra Modi kicks off the vaccine festival as total COVID cases reach over 13 million and the total death toll is over 160,000 in India. International news. The UK mourns the death of Prince Philip at the age of 99 on 9th April of 2021, with his funeral to be held on 17th April. An electrical distribution grid of a nuclear facility in Iran met with an accident a day after starting up of new nuclear enrichment centrifuges. In sports news, the IPLs began on 9th April with the first match being between Mumbai Indians and the RCB being won by the latter with 2 wickets. Thank you, Akshat. Now my friends are going to throw some light on Dr. B.R. Ambedkar's life. Ambedkar Jayanti marks the birth anniversary of independent India's first law minister and the chief architect of the Constitution of India, Dr. B.R. Ambedkar. Ambedkar Jayanti is celebrated on 14th April every year throughout the nation to commemorate the contributions of Dr. B.R. Ambedkar, who is also known as the father of the Indian Constitution. Dr. B.R. Ambedkar was fondly known as Baba Sahib and was a crusader of untouchability. The portrait of Dr. Ambedkar is garlanded at the Parliament, and leaders of all political parties pay their floral tributes to the great leader. The occasion is celebrated with great zeal and zest across the country, and people vow to follow the teachings professed by Dr. Ambedkar. Ambedkar Jayanti is the day which teaches us about equality, harmony, and peace.
It is a day to remember that the personality who gave us our constitution. Let's now gear up yourself to an amusing song presentation. Thank you very much for this lovely song. Now we are going to throw some light on life and works of Dr. B.R. Ambedkar through a sketch. आज हम यहाँ भारत रत्न की उपाधि से विभूषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 129वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाने जा रहे हैं जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा प्रदान की है। आइए इसे एक लघु नाटिका के माध्यम से देखते हैं। भीमा अंबेडकर जी के बचपन का नाम था। कक्षा का दृश्य। अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भीमा है। तुम्हें मालूम है ये छोटी जयंती का है और ये हमारे साथ पढ़ेगा। तुम हमारे साथ नहीं पढ़ सकते। जाओ बाहर चले जाओ जहाँ पे तुम्हारी जगह है। भीमा तुम बाहर क्यों खड़े हो? मास्टर साहब, इन बच्चों ने मेरे को कक्षा के बाहर निकाल दिया था। चलो मैं देखता हूँ। बच्चों तुमने भीमा को बाहर क्यों भेजा है? वह यहाँ पढ़ने आया है। चलो भीमा बैठो और पढ़ो। भीमा आज से मैं तुम्हें अपना उपनाम देता हूँ। बच्चों कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हम सब एक ही ईश्वर की संतानें हैं। हम सभी अपने अच्छे और बुरे कर्मों से जाने जाते हैं, इसीलिए अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करो, ना कि इधर उधर की बातों पर, क्योंकि कर्म ही व्यक्तित्व का जनक है। मास्टर जी, आपका किया हुआ उपकार मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। आज से पूरी दुनिया मुझे आपके दिए हुए उपनाम से जानेगी। मास्टर जी, जो मैंने अपने जीवन में छुआछूत का दंश सहा है, मैं नहीं चाहता कि इसे और कोई भी सहे। इसीलिए मास्टर जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि समाज में फैली हुई सारी कुरीतियों को समाप्त करने का मैं अपना भरसक प्रयत्न करूँगा।
प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत के प्रथम कानून मंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया, जबकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि देश के सामने उनकी प्रतिभा उभर कर आए, परंतु सूर्य को रोशनी फैलाने से भला कौन रोक सकता है, और वही हुआ भी। इसलिए आज हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी को संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। धन्यवाद। Thank you everyone for this interesting and informative skit. Now get ready for the pledge, followed by national anthem. India is my country, and all Indians are my brothers and sisters. I love my country, and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it, and I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness.